Assalamu alaikum. Okay, students, we are going to today discuss about what is demand. That is the part of your unit 2, and we are going to discuss about law of demand, which you have already learned during your first internals. We'll keep we'll just have a brief about demand curve, determinants of demand, and elasticity of demand, which is again an important long answers. Okay, now moving further, let us talk about what is law of demand. Yes, law of demand states that keeping other things constant, the higher the price of commodity, the lower will be the demand of commodity, and vice versa. Here, the law of demand states that basically keeping other things constant. Let us know later what is other things which we are keeping constant. We are only concentrating about the determinants of when we are talking about demand, law of demand. We are only concentrating specifically on price. What is the effect of price on the demand of the product or commodity, right? So basically here we are saying that the higher the price of the commodity, the lower will be the demand, because जैसे जैसे price increase होगा, the demand of the product will be automatically reduced because people will switch to the substitute goods if they want, right? So basically what will happen, the demand goes down. वाइस वर्सा इसीलिए बोल रहे हैं जैसा कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा तो डिमांड डिक्रीज़ हो रहा, उसी तरीके से अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा तो उस चीज़ की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी. दैट इज़ द वेरी ईजी लॉ ऑफ डिमांड. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट टॉपिक्स by understanding the same statement, right, which says the keeping other things constant. ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस इंक्रीज़ हो रहा, demand decrease हो रहा, right? And if the price is decreasing, demand is increasing. This is the basic formula of law of demand. Now it also states that keeping other things constant. What are the other things here? Other things are nothing but your determinants of demands. Okay, price is also one of the determinant of demand. Factors है जो demand को affect कर रहा. Okay, what demand of commodity? You all know that in economics and marketing, basically we all are aware that demand is something, the preference of the customers, where the customer is willing to pay, or specifically goods or services. So here it is demand refers to the consumer preferences. उसका क्या preference है, what is the basically a taste preferences of the customer or consumer on the particular product or services. That is called as demand, how they are reacting towards the product. Now in the law of state, demand says that अगर price increase हो रहा तो demand, what is happening, the demand is decreasing, and vice versa. But we all know that when we are talking about the businesses, it is not really the price that is affecting the demand. There are other factors also. There are n number of factors, but majorly we'll be talking about 5 factors when we are learning about law of demand and determinants of demand. The 5 factors what we are going to learn, determinants, factors or determinants, one on the same. factors और determinants हम जो पढ़ेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि प्राइस, सिर्फ प्राइस ही डिमांड को अफेक्ट नहीं कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो दी अदर फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट दी डिमांड ऑफ कमोडिटी और प्राइस. what are those 5 factors? The first factors we have learned in law of demand is price. The other factor is income. We all know that if the income changes, the demand also changes. How does it happens? What is the equation behind that? We'll learn in the further session. Okay. The third one is your, the first is price, income. The third one is your substitute goods or probably a complementary goods. Related goods बोल सकते हैं आप अगर इसको briefly अगर बोले तो related goods और services इसमें आएंगे आपके substitute and complementary goods. Okay, and the fourth one is your taste and preferences of the consumer also matters when I'm talking about the demand, fluctuation into the demand of the product or commodity. And the fifth one is your basically preferences of the customers or consumers expectation towards the product or price, future expectations बोल सकते हैं आप. Okay, so the further thing is your future expectations. These are the major 5 determinants of demand which we are going to discuss in the topic. Okay, the first one is price, second is income, third is related goods, that comes and which is again subdivided into complementary and substitute goods, taste of consumers, and future expectations of the consumers. बेसिकली अगर फ्यूचर में उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हम उस चीज़ को अब लेकर रख लेते हैं ताकि विल बी गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. व्हाट इट इज़, विल जस्ट लर्न बेसिकली इनटू द प्रॉपर्टीज वी कैलकुलेट सच काइंड ऑफ डिमांड्स. Okay, so moving further, before going into detailed study of this determinants of demand, let me also make you all aware about what is demand curve. Taking again this statement, now let us learn what is demand curve.
Demand curve is again it's a graphical representation of law of demand, which says that how the price is going to affect the demand of product. Demand on y-axis, and on x-axis we have price. Now let me give you a small example. Okay, when we are talking about demand curve, it is basically a graphical representation of your law of demand. Okay, we are aware about law of demand. It states that keeping other things constant. What are the other things? What are the other determinants and factors which we are going to learn in third topic? I have already discussed. Okay, so we have talked about the law of demand, and we have seen that in the statement itself it is going to discuss about the demand curve, determinants of demand, right? The demand curve क्या बोल रहा है आपका? Now demand curve is nothing but it is a graphical representation of your law of demand, which is again divided into, which is going to represent the demand and the price of the commodity. What is the like reflection of price and the demand of the product commodity, right? So here we are going to only concentrate about the price, that is one determinant of your demand. Yes, so we were talking about demand curve. Demand curve is again an important short answer. Demand curve is a graphical representation, I'm repeating, it's a graphical representation of law of demand, which says that keeping other things constant. Remember students, when you are learning about determinants of demand या फिर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़े और डिमांड कर्व के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड in the future also, whenever you are calculating a demand, you must keep in mind that unless and until you keep other determinants constant, you cannot calculate the demand like effect on one single determinant. अगर आप price का effect देख रहे हो demand पे, you must only concentrate on that. Okay, if you are talking about income, you must keep all the other things constant and you must only concentrate on income, how it is affecting. Right. So basically, when you are learning about determinants of demand and demand curve, it is not acceptable unless and until you are keeping other things constant. So in the same way, in demand curve, what we are doing, we are making a graphical representation of law of demand, which is making a relationship between between the demand and it affects on only one determinant, that is we are talking about price. Right. अब यहाँ पर let us see what is the effect of demand on price. It is making a curve. The name itself, it is saying demand curve. So I've just prepared it first. So now coming, okay, let me explain this graphical representation by taking an example. Say there was, it was a summer break and a boy named John, he went to his aunt's house, right? And his aunt's, her auntie works on preparation of mugs, right? Like decorative mugs, coffee mug, tea mug, say, right? And yes, so let us learn this graphical representation by an example where I have stated that there was a boy named called John. He went for his summer vacation and his aunt demanded that I make like a coffee mugs, decorative coffee mugs, and she wants him to sell that particular mugs. And John decided yes, he can do this work, and probably he decided to make a price of single mug as 60 rupees, right? Now the question is, why do we need to have this curve? Why do we understand? It was just simple that I kept the mug price as 60 rupees and like I'm going for selling it, right? But now what happens? Now John observed that he couldn't have any sales. There was no sales of the mug. So what will happen? Now he will analyze the demand of product. What is affecting the demand of my product or commodity basically? So what he come into the conclusion that is the price which is affecting. So what happens? Now the John kept the price of the product as 60 rupees, say for 60 rupees. And he observed that when he was keeping the price of the product 60, he didn't had any sale of the product. Now again moving further, okay, yes, so 60 rupees he have kept the price of the product. Then he thought that let us reduce the product price and I'll make each mug for rupees 40. And what he observed, as soon as he kept the price, he changed the price of the product into 40 rupees, he found there was a sales of 10 mugs. So basically the quantity demanded increased with the 10 mugs, okay, reached to the 10 mugs. And now after that he thought, let me reduce the like price more lesser, because he was having a good stock. He thought, let us sell it. And yeah, of course he was calculating the cost of the product. Then he reduced the product price to 20 rupees, and he observed that as soon as he reduced the price to 20 rupees, his quantity demand changed from 10 to
30. So that was a very drastic change. The demand of the product got increased. So what we have learned from here, as soon as the price is getting decreased, the demand is getting increased. That is the law of demand which explains, right? So now what is happening? 40 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ है, 10 प्रोडक्ट्स बिके, 20 रुपीज़ चेंज करते कि 30 हो गया. सो बेसिकली इट इज़ मेकिंग अ curve. So in that way John understood that this is the effect of price onto the quantity demanded. So basically the price decreases and demand increases. In that way you can learn about the demand curve. Okay, so what we have discussed, we have learned about law of demand, we have learned about demand curve. It's a very simple thing. Demand curve is the graphical representation of law of demand, which states that again the price, the effect of price, the relationship, it states basically a relationship between what? It shows the relationship between price and demand. Okay, so the very simple definition, demand curve is the graphical representation of law of demand, and it shows the relationship between the demand, and you need to draw this graph. Okay, now it's clear, demand curve and law of demand. Now let us see what is determinants of demand. As I told you, determinants or factors of demand, anything could ask in your exam. Okay, now what are the determinants of demand? I told you we will be discussing majorly 5. It could be your what are we going to discuss? About price, about income, about the cross related or related products, and about the taste and preferences of consumer, and also the 5th determinant which we are going to discuss is the future expectations of the consumer. Let me discuss what is price. Price, we have already learned about the determinants in the demand curve and law of demand. Let me go again with that the effect of price of demand is that the price increases, the demand decreases, and vice versa, right? There is one exception while learning this topic. The law states, which is very clear, that price determinants की जब हम बात करेंगे तो you are going to completely write about law of demand and demand curve. आप इसमें discuss कर सकते हो. Apart from that, what is the exemption over here is that here we are going to learn about the 2 more things, that is elastic demand. जब हम प्राइस की बात करेंगे तो ये हो सकता है कि प्राइस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिमांड पे ज़्यादातर लाइक what is the reflection, or I must say the effect of price must always be more positive. It could be vary, right? It could be or it couldn't be, right? So basically आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा price increase हो रहा तो demand decrease होगा, क्योंकि there are also other factors which we are keeping constant while learning the law of demand. But if we keep that in mind, again what will happen? It may fluctuate, right? So basically what is happening, अगर if in case the demand of the product basically has an effect here in basically when its price change will affect the demand. अगर आपका प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस चेंज हो तो उसका डिमांड भी चेंज हो रहा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसके प्राइस फ्लक्चुएट होने से उसकी डिमांड कम नहीं होती है. आई टेल यू व्हाट इट इज़. सो हियर व्हाट इज़ हैपनिंग, जब प्राइस चेंज हो रहा, वेयर देयर इज अ चेंज इन प्राइस, बेसिकली व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन प्राइस, व्हाट विल हैपन, they will be having more effect on demand. For example, what we are going to learn for effect on डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और कमोडिटी. सो बेसिकली वैसे चेंज को आप इलास्टिक डिमांड बोलोगे, जहाँ पर प्राइस चेंज होने की वजह से कमोडिटी के डिमांड में वेरिएशंस आएगी. इंक्रीज होगा तो कम होगा डिमांड, या डिक्रीज होगी प्राइस तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड स्टेट्स दैट बेसिकली व्हेन इट्स द प्राइस चेंजेस, इट इज़ हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल, बेसिकली आप देखो कि एयरलाइन टिकट्स आप ले लो. ओके आप देखो कि एयरलाइन टिकट्स probably people plans or trips where we are having a like less prices. We try to postpone or prepone our trips, or whenever we are going, we try to prepone and postpone based on the price of the tickets. अगर price कम रहा तो we try to have more and more pre-plan more and more trip during that period of time, right? So basically यहाँ पर क्या हो रहा है, price affect कर रहा है demand के लिए, demand of the product, right? And there could be many such example. Basically luxury items है, अचानक से उसका price अगर थोड़ा सा कम हो गया, we try to opt that, we try to grab that like opportunity. And if you see big million days, or Flipkart or Amazon provides big festivals or big billion days, in that what happens, they reduces the price. When they reduces the price, automatically what happens, you'll be seeing that वहाँ जो ranking रहता है ना product के आगे in the bracket, you'll be finding it is drastically getting increased. वो क्या हो रहा है, अचानक से इंक्रीज हो गया. वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज वहाँ पर क्या हो गया,
proper festival or big, people wait eagerly for that particular time of period so that they can purchase during that time. So here what is happening, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जहाँ पर डिमांड फ्लक्चुएट हो रही प्राइस कम या ज़्यादा होने से, देखो आप एयरलाइंस में हम ये देखें कि प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज हो गई. एंड द सेम वे इफ़ यू सी इन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, वी ऑब्जर्व दैट यहाँ पर प्राइस कम होने से क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गई. अगर आप डिमांड अब बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइस इंक्रीजिंग और इफ़ यू टेक अ जॉन्स एग्जाम्पल प्रीवियसली इन डिमांड कर्व, यू हैव सीन दैट जैसा प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हुई. सो हियर दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इलास्टिक डिमांड. ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे इलास्टिक डिमांड में जिसका प्राइस डायरेक्टली अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, इलास्टिक डिमांड इज नथिंग बट वेयर द elastic demand is where the price is directly affecting the demand of the product. अब इन इलास्टिक डिमांड में कौन से प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ आएंगे, ऐसे प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ जिसका कोई भी असर नहीं है डिमांड पे. अगर प्राइस कितना भी चेंज हो दो, सो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द demand. Now what could be that products? Basically your daily needs products. I must say that rice or and your LPGs and your food items, vegetables, veggies, fruits, right? This kind of products will have no effect on your what do you call with the prices. We need to buy it because it's of a necessity, right? Apart from that, you will also find that there are certain products like petrol. It is of a necessity. Petrol, whatever the price, if you find, you might have purchased the petrol when it was 52, when it had a drastic change, I think 6 years back with the 20 rupees of change, I believe. So even there, the demand was constant. There was no change in demand. We were reduce like I don't think so people might be reducing the trips and all also, because basically ऐसी चीज़ें जिसको कोई असर नहीं पड़ता when you are fluctuating a demand price of the product comes under the inelastic demand. Like for example, we have talked about the petrol. Medicines. If I talk about medicines, if whatever it is, if you are suffering from something, if the doctor prescribed you about the products of the medicines which is more than your budget, even then you need to purchase it because it is not going to affect the demand. ऐसे थोड़े products जिसका price से कोई लेना देना नहीं है, it is a necessity and we have to purchase whatever price it is, that comes under the elastic demand. I hope it is clear. Price is having direct impact on the demand, वाइस वर्सा, बट व्हेन इट इज़ हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसको इलास्टिक डिमांड बोलोगे आप. ऐसे प्रोडक्ट्स इलास्टिक डिमांड बोलोगे. इलास्टिक डिमांड में ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिसको कोई भी इवन वॉट एवर प्राइस यू इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, डिमांड विल बी न्यूट्रल. ओके, सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर प्राइस का कोई भी असर नहीं है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द इनकम. Now, income of the consumer. It is obvious that as soon as the income increases, now what happens? The demand increases because people are having money in their hand and obviously people will shop. Now, here we cannot say that. Here, as we have exemption in this determinant, we have the exemptions over here. What it is that when you, here, the higher the income, I understood that higher the income will be, higher will be the demand of the product and services. But as we have specifically defined the affection or the reflection of the price on the demand, in the same way income. अब goods के हिसाब से, like commodities के हिसाब से हम क्या करेंगे, income का reflection होगा demand पे. Like for example, जैसा higher income, अब for say example you had a promotion and your income got increased, or you might have any sources of income, and you automatically try to concentrate on the luxury items, right? Normal goods पे भी आप क्या करते हैं, अगर आज कोई चीज़ 2 खरीदें तो next day आप क्या करोगे, when you are having a good income you try to take it in a more amount, right? तो हायर इनकम का इफेक्ट रहेगा सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे एंड नॉर्मल गुड्स. इट इज हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट when you are having a more income, but in contrast, when you're having a lower income, what will happen? You are having a negative impact on lower income, then you are having a positive impact on inferior goods, right? So in this way we are having the impact of income. Higher income, then you'll be concentrating the demand of luxury item increases and the normal goods, whereas the lower income, the inferior goods demand will increase, and when you are having a higher income, the demand of lower inferior goods got
decreased. Okay, so now there is one more exception over here which says that ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो लग्जरी आइटम्स और नॉर्मल आइटम्स हम प्रॉब्ली ज़्यादा खरीदना शुरू करें तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती. ओके, दैट इज़ व्हाट वी आर लर्निंग. बट हियर इफ़ यू से दैट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, बेसिकली अगर हम ये कॉन्सेप्ट अगर और ध्यान से पढ़े तो यू वी नो दैट लग्जरी आइटम रहने दो, नॉर्मल आइटम्स रहने दो, जो भी हम खरीद रहे हैं, बट इसमें थोड़े ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको हम दोबारा इस्तेमाल करने से उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल लो हो जाता. यू माइट हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग योर इंटरमीडिएट. आई विल टेल यू व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट. दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये कॉन्सेप्ट है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर. यू मस्ट नोट डाउन दिस एंड आई विल बी चेकिंग योर नोट्स प्रॉबली नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. ओके, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी हम इनकम में पढ़ रहे हैं. हम यहाँ पर इलास्टिक और इलास्टिक पढ़े. दिस आर ऑल शॉर्ट आंसर्स विच वी आर लर्निंग इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप एक्सेप्शन कर सकते हैं इनकम डिटर्मिनेंट में. अब इनकम डिटर्मिनेंट में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, इनकम अगर इंक्रीज हो रही तो ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज हो रही, लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही, लग्जरी आइटम्स और नॉर्मल गुड्स की. बट वेराज द इन्फीरियर गुड्स को क्या होता है, डिमांड डिक्रीजेस. दिस इज द इफेक्ट ऑफ द इनकम ऑन दी अदर लाइक दिस 3 टाइप्स ऑफ गुड्स. बट हियर वी आर सेइंग कि अगर आप नॉर्मल गुड्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं बोल रहे हैं, लग्जरी गुड्स अगर आप इंक्रीज हो रहे हैं बोल रहे हैं, बट द पीपल when they are using it for the second time, their satisfaction level goes down. How it is possible? I'll give you one simple example. When you go to ice cream parlor, basically say your salary have increased to like 50%. Now you are earning around 1 lakh rupees. So when you were earning 50,000 rupees, you might have you keeping all the expenses in mind, you might have taken one ice cream cone and probably you have given a treat to your friends of one ice cream cone. When you got 1 lakh rupees, you might take another one because it was your favorite ice cream which you have already always urged to have in a more quantity, but because of your income you were unable to do that. You'll take one more. But do you think if you are earning 1.5 lakh rupees, will you purchase more and have it? Because your satisfaction level goes down. अब यहाँ पर क्या होता है, आपका इनकम अगर आपकी 2 लाख भी हो गई तो आप क्या करोगे, वो 2 ही कौन खा सकोगे, क्योंकि here the satisfaction level of that product or services got decrease. That is called as law of diminishing marginal utility. मतलब यहाँ पर utility means use of product, diminishing low. राइट. अब हम कोई भी चीज़ को किसी हद तक मार्जिनल किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी सेइंग दिस मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, सो बेसिकली हियर ऐसा हो जाता कि अगर आप मार्जिन डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट द वट एवर यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बेसिकली इवन इफ योर इनकम इंक्रीजेज, दे आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज है जो आप एक्स्ट्रा या डबल नहीं खरीदोगे, बिकॉज हियर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट हैपन्स, it get decreases. Now here what you have learned, you're learning about law of diminishing marginal utility, which says that a consumer goes on purchasing more and more units, the utility of the product, the use of product got decreased or diminished, which will at the end reach to the zero. ये एक exception है आपका इनकम में. आप हमेशा ये नहीं बोल सकते हो कि इनकम इंक्रीज हो रही तो डिमांड भी लग्जरी आइटम और नॉर्मल गुड्स का इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर एंटर कर रहे हैं. विच सेज दैट कोई भी चीज़ को आप किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर गॉट लो. आप ये नहीं बोल सकते कि अगर वो इफ ही इज अर्निंग 10 लाख ऑफ रुपीज़, ही विल परचेज ऑल योर शॉप, बिकॉज probably they won't require that products in more number, because the satisfaction level goes low and diminish and it will reach to zero. Here basically, okay, so what we have learned in income, the higher the income, the higher will be the demand of luxury items and normal items, and the higher the income, the demand of the inferior goods goes down. Okay, but also keeping in mind one exemption, that is law of diminishing marginal utility, which says that however the income increases, but the utility of the product and services will rest till point, and because the consumer satisfaction level goes down as soon as they use more and more units of your product. Okay, that is clear, income. Now the third is your taste of consumer. Okay, price of related goods and services. Now basically related goods and services क्या होंगे,
ये होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? नाउ वी आर सेइंग कि अगर प्राइस रिलेटेड गुड्स का किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है डिमांड. नाउ रिलेटेड गुड्स में आएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि वो रिलेटेड है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो साथ में आते. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू ब्रेड एंड बटर. अगर आप ब्रेड ले रहे हो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, सो योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल बी बटर. यू नीड टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कार एंड पेट्रोल. अगर आपके पास कार है तो यू नीड टू परचेज द पेट्रोल टू रन द कार, राइट? सो एंड लाइक दे आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टी एंड शुगर. ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट? टी एंड शुगर आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. उसके बजाय हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, यस, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का डिमांड प्राइस इंक्रीज होते ही क्या हो जाता? अदर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज हुआ था. नाउ हाउ इट इज अफेक्टिंग? let me give you an example. In America, if you go through the case studies, what happened in 2000, I remember in 8 or 10 something, अचानक से क्या होगा कि gas prices rose to $4. Basically it was 1.5 or $2, and it automatically rose to $4 which lead to the decrease in demand of trucks. SUV trucks जो रहते ना, उसका डिमांड क्या होगा? अचानक से डिक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि वो जो गैस फिलर्स थे, बेसिकली व्हाट हैपेंड, इट इंक्रीज द प्राइस. तो अगर आप ट्रक ले रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ ट्रिप्स एंड यू आर अर्निंग मैक्सिमम इनकम, यू आर गोइंग टू एक्सपेंड इनटू योर परचेसिंग ऑफ द गैस, बिकॉज America have planned to increase the prices for the from 1.5 or 2 to $4, which is a drastic, or I must say 50% of increase into the price. So what happened is जब gas prices rose to $5, it have automatically affected the complementary good, that is SUV trucks demand got decreases. So that is the I must say that is the relation, or that is the effect of complementary goods on the demand of the product. Let me give you another example, that is the rise in the sugar prices will decrease the demand of tea, because people will avoid having a tea. I don't think so we have this criteria in India, but still for an example we can imagine that अगर sugar का price increase होगा तो tea का भी price, tea का demand decrease हो जाएगा, क्योंकि sugar नहीं खरीदना है तो probably people won't prepare tea and have it at home, right? Next is your petrol. Again example, petrol increase हो रहा तो people will not expend more on vehicles. This kind of examples. Tea, bread and butter का price increase हो तो people will avoid taking breads to have rather they can move for the substitute goods, right? तो complementary goods का effect हो रहा है on the demand, right? Now substitute goods. Substitute goods में हम आएंगे. I'll tell you one thing. Students, iPhone always, Apple company always upgrade their probably this electronics, the mobile phones or the laptops, the iPads. What is the reason why they need to upgrade their things? Because they are the people, they are ruling the I must say the industry, the mobile industries. But even though they try to upgrade, why? Because they don't want their demand must be snatched by their substitute goods. Who are the substitute goods for Apple iPhones? Basically there are Android phones. अब एंड्रॉयड फ़ोन सब्स्टिट्यूट गुड्स है. अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते आईफोन, दे विल परचेज द एंड्रॉयड. अब जो आईफोन ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनके लिए भी तो अपग्रेडेशन चाहिए, बिकॉज दे माइट नॉट स्विच टू द अदर फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड विच इज कमिंग विद इट, राइट? सो बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अगेन हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन टू द प्राइस. सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर दो, ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स गॉट इंक्रीज. जैसा कि आईफोन का प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ एंड्रॉयड फोन्स इज गेटिंग increased. Okay, makeup products. Again, coming to the cosmetics, if you see, we have many luxury cosmetics in the market, right? Which is in a high demand, which is having more and more. Like simple example, I'll give you MAC. एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट लो गया तो इट इज़ चार्जिंग अराउंड 4,000 to 5,000. बट स्टिल व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसका डिमांड होने से द आईबा इज़ प्रोड्यूसिंग और हुदा इज़ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, अ प्रॉपर कॉम्पैक्ट इन अ वेरी रीजनेबल रेंज, एंड दे आर सेइंग वी आर प्रोवाइडिंग द सेम. दैट इज कॉल्ड एज ड्यूप प्रोडक्ट्स. तो हम यहाँ ड्यूप प्रोडक्ट्स नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं. जैसे ही प्रेजेंट आइटम का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का डिमांड क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि हम उसको अफोर्डेबल प्राइजेस में लेकर आ रहे हैं. दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स में हम क्या पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. Okay, the fourth one is the taste of consumer. Okay, taste of consumer. Here
I'll tell you that it is very important thing to learn about the taste of consumer based on the demographic or geographical area, their demographic like demands basically, and yeah, the places where we are going. Taste and preferences really matters. If you try to go and sell the Indian attires in America and you think that they'll be having a huge demand, then you're absolutely into a wrong way. If you go and sell the spices in America, you are again going into a wrong way. If you see, we are having many outlets of Indian, I must say, hotels into the other foreign countries and as well as Gulf countries. But whenever they are selling the things over there, the products over there, they do not use more Indian spices over there. They have a specific spices there which is related to the environment. So basically based on the taste and preference of the consumer. If you keep in mind taste and preference of the consumer, the demand automatically increases. So basically again, the taste and preferences keeps a lot of impact. Taste preferences based on the geographical area, demographic factors, you must always socio factors, cultural factors, ये सारी चीज़ें आपको taste और preference में आएंगे. जब आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो your demand get increase of the your demand of the product get increased. Okay, next is your expectations. Expectations of consumer, expectations of future demand. This is the another factor. Yes, when I'm talking about expectation of future demand or expectation of consumer, that the future demand मतलब कि आगे चलकर वो product का price increase होगा. So I'll tell you the example. Best example could be your gold, properties, stocks, bonds, right? So basically हम ये चीज़ें खरीदते ही दिमाग में ये रख कर कि अगर आज खरीदेंगे तो कल प्राइस इंक्रीज़ होगा. अगर हमें पता चल रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ होगा तभी हम ये चीज़ का डिमांड इंक्रीज़ होगा, राइट? आई टेल यू वन सिंपल एग्जांपल विच सेज दैट लाइक इन 2005 there was an asset bubble. Asset bubble, you might be aware about this term, where the properties, golds and stocks have a huge demand. अचानक से उसका क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो गया. डिमांड इंक्रीज होने से क्या हो गया कि विच लीड्स बेसिकली प्राइजेस इंक्रीज हो गए एंड विच लीड्स टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीज. क्योंकि हम ये सोचें कि इट्स अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. ये फैक्टर, ये डिटर्मिनेंट्स कब यूज़ होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. ओके, सो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग यहाँ पर 2005 में जब प्रॉपर्टी स्टॉक्स अचानक से उसके प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो लोगों का डिमांड भी इंक्रीज हुआ. ये सोच करके वो साल ब साल उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा, तो हमें आगे चलकर उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा. से फॉर एग्जांपल 2005 में प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम ये सोचे कि आने वाले सालों में इसका प्राइस और इंक्रीज होगा, हम उसको बेचकर और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे. 2007 तक भी ऐसे ही रहा. बट अचानक से व्हाट हैपेंड, the price of that properties, stocks and gold got decreased and it reached to the, and it was the price decreases and demand decreases. क्यों डिमांड, अब तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट तो ये बोल रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा. व्हाट एम आई टीचिंग टू यू, द थिंग ओवर हियर इज कि ये फैक्टर जब हम पढ़ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड में ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे. यू माइट हैव सीन थ्रू आउट द डिटर्मिनेंट्स. हम यहाँ पर प्रोडक्ट के बेसिस पर डिटर्मिनेंट्स को अलग कर रहे हैं कि हर प्रोडक्ट का अलग डिटर्मिनेंट, अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड. ओके, सो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ, प्रॉपर्टीज है, प्राइस इंक्रीज होता है कि डिमांड देखा है तो कम होना चाहिए. बट व्हाट हैपन, पीपल विल परचेज दिस इन अर्ज दैट आगे चलकर उसका प्राइस इंक्रीज होगा. सो हियर व्हाट हैपन, जैसा प्राइस कम होता है कि डिमांड भी डिक्रीज होगा. अब लोग यहाँ पर डर गए कि अगर हम खरीदेंगे, प्रोबेबली दे थॉट कि अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को खरीदेंगे तो हमें आगे चलकर उसका नुकसान होगा. 2011 तक भी क्या होगा, उसका डिमांड और प्राइस इंक्रीज रहा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस गॉट फ्लक्चुएटेड. तो हियर अकॉर्डिंग टू दिस इज ऑल्सो द सेम लॉ ऑफ डिमांड वी आर स्टडिंग. हम वही कॉन्सेप्ट पढ़ें, लेकिन यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट चेंज होने की वजह से, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी चेंज होने की वजह से पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, जो बोल रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा. हियर द रीजन इज बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर ROI. Okay, for that reason we are describing this determinant in this way. So we have learned about the price criteria, the income and the taste and expectations.
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड रिलेटेड गुड्स. सो बेसिकली ये 5 डिटर्मिनेंट्स हम पढ़े. अब यही सेम 5 डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स को हम लेकर हम प्राइस में क्या पढ़े. प्राइस में हम इलास्टिक और इनलास्टिक डिमांड पढ़े. इनकम में हम ये देखिए कि इनकम इंक्रीज हो रही तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो रही, लग्जरी और नॉर्मल आइटम्स की डिमांड इंक्रीज हो जा रही. बट एक फैक्टर ये भी है कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि मतलब एक कस्टमर एक हद तक ही आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उसका जैसा ही आपका प्रोडक्ट वो बार बार यूज़ करेगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगा. Now taste related goods, complementary goods and substitute goods we have discussed. Taste and preferences of the consumer, which comes in the factors of you need to consider geographical, demographic factors, socio factors, cultural factors over that. Okay, based on that, the taste and preferences changes with the consumer and it affects the demand of the product. Expectations of future demand, which we have just learned that as soon as the price increases, demand increases, where we are talking about the ROI, rate of return की जब हम बात कर रहे हैं, investment की जब बात कर रहे हैं, here the determinants concept completely got changed. Okay, so these are the 5 determinants and factors which we have learned. I hope it is clear to you. By taking these 5 factors, we'll learn about the elasticity of demand. Elasticity of demand जब हम पढ़ रहे हैं, you must always remember about the 2 concepts, elastic demand, inelastic. Elastic demand में हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपकी प्राइस का डायरेक्ट इफेक्ट रहेगा डिमांड पे, राइट. तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक.